Now, the next topic is historical change in sectors. We are going to discuss about the changes happened in various countries, especially in developed countries. The developed countries have gone through historic change in the economic sector, as the economic activities had gradually shifted from primary to secondary, then secondary to tertiary sector. The developed countries today, like America, Britain, etc., were agricultural countries once. And then industrialization happened, or they move into the industrial sector. That means the secondary sector. And from there only, that means the economic activity, there also they shifted economic activity from primary sector to secondary sector. Then in the past 100 years, there has been a further shift from the secondary to tertiary. We can say that now service sector has become the most important sector, not only in India, in all over the world. The most important sector is this tertiary sector. Now come to India. We just going to discuss about India. 1950-60, that means after independence, we got our own government and all. That time, this 1950-60, Indian economy was dependent on agriculture. Right? 1950-60 में हमारा जो economy है totally depend था agriculture. That means the primary sector से. Afterwards, 1970 to 2003, हमारा जो तीनों सेक्टर ऐसा नहीं कि हमने एकदम से शिफ्ट कर दिया इंडस्ट्री देन इंडस्ट्री से टर्शरी. तीन सेक्टर में प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स इंक्रीज सब्सटेंशियली, बट most means much increase or improvement that was in tertiary sector. Right? Next is, please look at the graph. This is a rough graph only. You can see the graph in your textbook. And this graph gives a comparative analysis of the sectorial contribution to our GDP. See the contribution of GDP in 1970-71 and 2010-11. 1970-71 contribution of GDP is very less. This is the primary, this is the contribution of primary sector, contribution of secondary, and contribution of tertiary sector. But 2010 contribution is totally increased. This is due to the tertiary sector. That means tertiary activities increased or improved. Like export increase, and stock markets, banking, all increase. So in such a way, GDP also increased. And in India also, that means not only in developed countries, in India also, importance of service sector, that also, service sector ka activities improve ho gaya. So in the year 2011-12, we can say the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India. In 2011-12, we can see that totally the largest production unit or production center sector, that is the service sector or the this thing that replace the primary sector. Replace the primary sector. इसका माने ये नहीं है primary sector का पूरा importance खत्म हो गया. No, don't think so. प्राइमरी सेक्टर भी है और आप पढ़ेंगे अभी कैसे इसका जो चेंज, व्हाई दिस क्वेश्चन भी आएगा 5 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया. You can write a question also, why tertiary sector is so important or famous in India. Several reasons were there. Right? First of all, basic services. You know what are the basic services? कोई भी कंट्री है, बहुत ऐसे सर्विसेज होता है कि बेसिक सर्विस होते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है ना, कम्युनिकेशन का, पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट, विलेज ऑफिसर्स, म्युनिसिपल ऑफिसर्स, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस, नंबर ऑफ like this, there are बहुत सारे एक्टिविटीज है. These are known as the basic activities or basic services. All the developing countries, they are providing, government is providing all these services to the people. Like India में हमारे को government schools are there, banks
प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सब कुछ, कोर्ट एंड ऑल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. सो दिस गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री में प्रोवाइड कर रहा है, दिस आर नोन एज द बेसिक सर्विसेज. सो बेसिक सर्विस इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बेसिक सर्विस इंक्रीज होगा, तो 100% दीज आर सर्विस ओनली. सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट होता ही है ना. फर्स्ट पॉइंट है ये. पूछेंगे आपको क्वेश्चन, व्हाई द टर्शियरी सेक्टर इज मोर फेमस और इम्पोर्टेंट, बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया. तो आप फर्स्ट पहले बोलेंगे, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ये सब जो भी बोला है, ये सब कुछ क्या करेंगे, एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड. एंड इन डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया में ये सब कुछ कौन दे रहा है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. First point हो गया. And the second point, see, greater development in the primary. That means gradual development of the primary and secondary. जब प्राइमरी डेवलप होगा, सेकेंडरी डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली सर्विस डेवलप होगा. क्योंकि अगर तुमने कुछ प्रोड्यूस करे, तुमने पहले तो 10 किलो या 100 किलो कॉटन बॉल्स प्रोड्यूस करते थे, अब तुमने फैसिलिटीज मिल गया, तुमने 1000 किलोग्राम या उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया. सो 100% अगर तुम जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना तुम्हें लेके जाना कहीं और. तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सर्विस. क्या कहाँ पर है, सच एज ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, स्टोरेज में, नंबर ऑफ प्लेसेस में वी कैन से. सेकेंडरी एंड प्राइमरी का इंप्रूवमेंट मीन्स टर्शियरी का इंप्रूवमेंट. ये आप बोल सकते हैं 2 पॉइंट्स. पहला बेसिक सर्विस, सेकंड ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. क्लियर. अगर नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ द पीपल रोज, द डिमांडेड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. श्योर, जब इनकम बढ़ गया है तब क्या करेंगे, सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे, सिनारियो चेंज हो जाएंगे. सी, आई माई सेल्फ स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, नाउ आई एम सेंडिंग माई चिल्ड्रन टू अ प्राइवेट स्कूल. इनकम जब बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, हमें चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स चाहिए, राइट. एंड मतलब जो डिमांडिंग मेनी थिंग्स, वी आर गोइंग, वी वांट टू गो फॉर आउटिंग ऑल्सो, वी वांट टू गो शॉपिंग करना है हमारे को, टूर जाना है हमारे को, ईटिंग आउट, टूरिज्म चाहिए, शॉपिंग चाहिए, ये सारे आपका इसमें आ जाता है. जब इनकम, पैसा नहीं तो कोई शॉपिंग करेगा, नो. पैसा नहीं तो कोई टूरिस्ट प्लेस में जाएगा, मॉरिशस जाएगा, नहीं. जब तुम्हारा सर्विस सेक्टर आगे बढ़ गया, तुम्हारा इनकम भी बढ़ गया, तो 100% यू नीड मोर. यू वांटेड टू गो आउट. अगला संडे वहाँ जाना है, इस संडे वहाँ जाना है, वहाँ खाना है, पार्टी बनाना है, ये सब कुछ. तो ये सब सर्विस है. तो इन सच्चे में सर्विस सेक्टर का जो डिमांड बढ़ते जा रहा है, राइट. ये सब लिखेंगे आप. ये की पॉइंट्स याद रखना आपको. देखिए, सिंपली आप लिख सकते हैं. बाकी तो आप अपने मन में जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, मन में आएगा तो लिख लेना. सिंपल, डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज. बेसिक सर्विस जब भी मन में आएंगे, स्कूल वगैरह ये सब कुछ याद आना है. हॉस्पिटल, बैंक एंड विलेज ऑफिस, म्यूनिसिपल ऑफिस, है ना, पुलिस, ये सब कुछ है. प्राइमरी डेवलप, ये तो ऑटोमेटिकली आता है. प्राइमरी डेवलप होगा, सेकेंडरी डेवलप होगा, तो घर में देख नहीं सकता, लेके जाना है. सो 100% टर्शियरी ऑल्सो मतलब इम्प्रूव होगा, दैट ऑल्सो. देन इनकम लेवल, अपने बारे में सोच लेना. तुम्हारा पैसा आकर आएगा तो क्या करेंगे, पार्टी बनाने के लिए जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना, टूरिस्ट प्लेस जाएंगे, है ना. ये सब कुछ आप याद रखेंगे. ठीक है. 3 पॉइंट आराम से मन में आएगा. नेक्स्ट, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन पता है ना क्या, मतलब जो वी आर कनेक्टिंग विद वेरियस कंट्रीज, सो वी आर टेकिंग द टेक्नोलॉजीज, वी आर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज, वी आर गिविंग सम आइडियाज टू देम एंड वी आर गिविंग आइडियाज फ्रॉम देम. अंडरस्टूड. दैट इज ग्लोबलाइजेशन. आज चैप्टर ऑल्सो पढ़ने के लिए. तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स क्या करेंगे, सर्टन न्यू सर्विस ऑल्सो ओरिजिनेटेड. न्यू सर्विस ओरिजिनेट कर. एग्जाम्पल लिखा है IT एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. मतलब that is the service is based on information and communication technology that become most important and essential nowadays. इंटरनेट के बिना देखो, सी, दिस इज हैपनिंग. कभी सोचा भी नहीं है ये ऐसा होगा करके. मैंने कभी सोचा नहीं मैं बच्चों के बिना पढ़ाएंगे, isn't it? So this is happening because of this only, new service only. And this देखो कितना आगे बढ़ गया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेट एंड इंटरनेट एंड सब कुछ आगे बढ़ गया. दिस द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली.
All these 4 points you have to elaborate for why is the tertiary sector so important, becoming so important in India. ये क्वेश्चन आएगा तो ये सारे पॉइंट्स लिखना है. Okay, now it is the questionnaire. Please note down these questions and write in a copy. First question is that only from the first topic as well as the second part. Classification of first question, classify the economic sectors on the basis of the nature of activities or job. Mention the main feature of each. In this you have to write about the primary sector, secondary sector and tertiary sector. Right? 3 mark question है, please write it down carefully. और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, explain the 3 sectors of economic activity with the help of examples. ये भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, explain the primary, secondary and tertiary sectors by giving. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में होता है आपको on the basis of the nature of the job, ये आपका इनडायरेक्ट होता है, तो इसलिए आप उसमें ये लिखना है. एंड 1 मार्क में आ सकता है डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर, डिफाइन टर्शियरी सेक्टर. ये तो आपको अलग से लिखना नहीं है, यू नो नीड टू राइट सेपरेटली बिकॉज ऑल दिस कम्स इन दिस अंडर दिस आंसर ओनली. राइट, नो नीड टू राइट. And 1 mark, this question also will come that which sector is known as a service sector, which sector is known as the industrial sector, which is known as the agriculture related sector. या उल्टा भी पूछ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, टर्शरी का दूसरा नाम क्या है, ना इस तरह भी पूछ सकता है. That you have to. And next question is economic activities are interdependent. Explain with example. Economic activities are interdependent. राइट, इसमें आपको बोलना पड़े येस इट इज़ ट्रू बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, या डिफरेंट एग्जाम्पल के तो एक्सप्लेन कर देना. कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाई कॉटन, मतलब फ्रॉम कॉटन फार्मर्स से, अगर इंडियन कॉटन प्रोड्यूसर्स से अगर इफ़ यू आर कंपनीज आर नॉट रेडी टू परचेज दिस थिंग्स, तो क्या करेंगे. प्राइमरी सेक्टर का कॉटन बॉल्स कहाँ जाएगा, इसनट. अगर वो नहीं, अगर सेम आसिटी से कॉटन फार्मर्स ने सोचा है कि हम कॉटन बॉल्स वी आर नॉट रेडी टू गिव टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो व्हाट विल हैपन, isn't it? So if both the sectors are not mutually ready to understand, then what about the tertiary sector? So all the sectors are interdependent, so you have to write about all these things. Okay, so suppose transporters are on strike, good example. Transporters are on strike also, it's not possible. मतलब जो 100% डाउन हो जाएगा कौन है, सेकेंडरी और प्राइमरी. राइट, आप ये भी बोलेंगे, ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो विल फेस द प्रॉब्लम, नो डाउट. तो आप ये बोलेंगे. सो क्लियरली वी कैन से दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज इंटरडिपेंडेंट. एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल और दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपने डेली लाइफ से ले सकते हैं. सपोज डेयरी फार्मिंग क्या मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना, अगर मिल्क डेली का मिल्क अगर लेके नहीं गया है तो क्या होगा, मिल्क तो ख़राब हो जाएंगे, इज़न्ट इट, स्पॉइल हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसको मिल्क को लेकर के जो एक्स्ट्रा जो मिल्क आएगा वो उसको फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बनता है, आपको डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स बनता है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. ट्रांसपोर्टर्स अगर स्ट्राइक करेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So these sectors are interdependent. You can write in your own answer also. There is no problem. So you no need to refer the textbook also. थोड़ा सा अपना अकल यूज़ करो. And next में define GDP and calculation of GDP is difficult task. Why is the calculation of GDP is a different or difficult task? जीडीपी आपको पता है क्या होता है, डेफिनेशन ऑलरेडी दे रखा है. टोटल वैल्यू ऑफ द 3 सेक्टर्स, ठीक है, ध्यान रखना आपको. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आल्सो मेंशन. कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज अ डिफिकल्ट टास्क. व्हाई, बिकॉज ये पहले बोलना कि ये कौन करता है. इट इज़ डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ओनली with the help of various departments of all the Indian state. हर एक इंडियन स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके उनसे लेकर के सब कुछ करता है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. टोटल वॉल्यूम्स हर एक स्टेट निकालना, प्राइस निकालना, जो मतलब जो फाइनल गुड्स का, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ये आप लिखेंगे उसका.
और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हाँ, हाउ इज टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? हाउ इज टर्शरी सेक्टर 1 मार्क में पूछ सकता है ये आंसर, लेकिन 3 मार्क में पूछ सकता है। हाउ इज टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर? पता है आपको, टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स, राइट? इट इज ओनली एनहांसिंग और एनकरेजिंग द बोथ सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स. It is not producing any products. First or second sectors, the primary or secondary are producing, but this is not producing anything, right? ये आप ही लिखेंगे. इंटरडिपेंडेंट आपने लिख लिया, डिफरेंट वो कर दिया आपने. और why does the history of developed countries indicate about the shift that have taken place between sectors? Once again, what does the history of developed countries indicate about the shifts that have taken place between sectors? This also you have to write. हिस्ट्री इसके बारे में लास्ट में मैंने बोला था, इनिशियल स्टेज में एवरी मतलब ईच कंट्री, डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो दे स्टार्टेड फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से, देन दे चेंज इनटू द सेकेंडरी सेक्शन. द लास्ट 100 ईयर्स में से वो जंप हो गया कि आपका प्राइमरी टर्शरी सेक्टर में. ठीक है, आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर का स्टेज था तब सारे लोग सब कुछ नेचुरल प्रोडक्ट जो उसने यूज़ किया था. ठीक है, अनदर फेज में क्या कर दिया, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमारे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जब प्राइमरी का पूरा सफल हो चुका है उसके बाद क्या कर दिया, उन्हें एक्सेस जो मटेरियल आ गया उससे कुछ बनाने के सोचा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट इस अनदर सेक्टर में शिफ्ट हो गया, मीन्स सेकेंडरी में वो बनाना शुरू कर दिया, मीन्स दे स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स, राइट? ये आप बोलेंगे. फैक्ट्रीज क्या केम अप एंड डेवलप, पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो पीपल स्टार्टेड फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर. फिर वहाँ से फिर क्या कर दिया, मैंने आपको बोल दिया कि वाई द टर्शरी सेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, बेसिक ये सब कुछ है ना, वो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई टर्शरी सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया मीन्स बिकम इम्पॉर्टेंट, कैसे बन गया इंडिया में इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें वो 4 पॉइंट्स आपको क्लियरली लिखना है, वो क्लियरली मैंने मेंशन किया है, दैट ऑल्सो हैव टू राइट. और हाँ, इतना क्वेश्चन आप लिख लीजिए, rest questions I will give you afterwards. Okay, thank you.